Good evening, Ria. Hello, Akram. Hi, Poonam, Rizwan, Harinder. Hi. So जितने भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं तो दिस लाइव इज़ नॉट अबाउट टीजीटी पीजीटी, ठीक है? दिस लाइव इज़ अबाउट समथिंग एल्स. तो आज हम बात करेंगे किसी से और जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, ठीक है? गुड इवनिंग लता. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. मैं ज्वाइन कर लेता हूँ डायरेक्ट और फिर बात स्टार्ट. Hello, Kavya. How are you? Hi. Hi, Zubair. I am so Hi. happy to see you. Oh, you too. Same Hi, here. How are you? everyone. I'm good. I'm good. Hi, Balveer. Hi, Vijay. Hi, Tejaswini. There's so many people. I am good. In fact, मैं अभी एक live class ले रही थी. Hi, Oh, Shalini. And I just, like there were some questions, and I was like, okay, I have a live on Instagram with a friend okay. So I've you were taking recently class on made. NAS Academy. NAS Academy, I Yes. think. Yes. So how it's going there? Crazy होता है कभी कभी so हाँ. this was like one of the classes where we Hmm. talk about productivity, and in the class there were some 208 people. Oh my goodness. So it gets very crazy. हाँ. Yeah, but thank you so much. Also thanks to you. I mean, we were looking कुछ collab करें साथ में, and then you were like, okay, let's do live. So thanks to you. And it was so random and it was so quickly, na? It happened really Yeah, fast. हाँ. totally. Okay, so Hi, I think we should Ghanshyam. go Yes, or totally. I think, हाँ, and totally I ना? think I want to know a little about your work, and because हम लोग अभी I think for all of you people who are listening to us, me and Hmm. Zubair are like recent. There's a very interesting community of which हम दोनों उसके Hmm. part हैं, and yeah, and Zubair was like, okay, let's collaborate. I think he's in education field. He's doing very Yes. well. I'm I'm a, I'm somewhere a in, teacher. yes. I'm a teacher. I teach American English or Irish literature. So, That's so all interesting. good. तो आप कहाँ हाँ. पे based हो? I'm based from Meerut, UP. Okay. That's interesting. Okay. कभी मेरठ आना हुआ तो now I have a friend. Oh, yeah, sure. You're most welcome. You're most welcome. Done. हाँ. Sure. Okay. So, I read about you. ठीक है? I read all the articles that have been published. ठीक है? About you. Or I was really fascinated. And the first question came in my mind was कि कैसे इतना अलग. उसमें मैं पहले बाद में जाऊंगा क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है पहले आप उनके बारे में मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ये है कि टेल अस अबाउट यू. हु इज काव्या सक्सेना, वेयर इज शी फ्रॉम. आई थिंक इतना मुश्किल होता है ये ऐसा क्वेश्चन, पता है कि कौन हो आप, बियॉन्ड योर नेम. सो यू नो, आई कम फ्रॉम राजस्थान. आई एम अ नेटिव ऑफ राजस्थान. करेंटली भी मैं अपने पेरेंट्स से मिलने आई हुई हूँ. इट्स लाइक दो समर वेकेशंस, आई थिंक आफ्टर 12 years of corporate life. So basically, मैं राजस्थान की थी, to cut it short, and my education happened, my schooling happened in Rajasthan in various places, Sofia, this, that. And then उसके बाद मैं graduation के लिए मैं दिल्ली चली गई, in Miranda House, Delhi University, because my family also moved there. So I was, and then after that, I have done my MBA from Loyola in Chennai. So मेरा education happened in different states, which is why it made me really like बहुत early age में मैंने different जगह देख ली थी. And after that, I got into this public sector company called Indian Oil Corporation, and that happened by campus. तो शायद मैंने कुछ अच्छा ही किया होगा कि मेरा campus से ही job लग गया without giving any written test or something. By just so I worked there for 9 years, and after that,
I felt that, you know, maybe I have so much energy, मुझे कुछ ज़्यादा करना चाहिए. And by that time I was already थोड़ा traveling on my own. ये तब की बात है जब शायद Instagram नहीं आया था. तो Okay. फेसबुक ज्यादा रहता था एंड ओरकुट भी था. आई थिंक जब मैंने स्टार्ट किया था Wow, तो ओरकुट okay. एकदम एंड हो रहा था. So Hmm. yeah, I think I come from that part of the time, and Facebook was full on. I used to write a blog also, and then I just even then I did not leave my job. So I was heading some amazing brands. So after Indian Oil to the period when I completely went freelancing, that was a very golden period because I was brand head to some amazing brands at very senior position, Wow. which made me realize the importance of money, how to earn Hmm. good amounts of money, how to have power, how to manage teams. बट फिर मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पास ये सारी चीजें होती है ना, देन यू आर लाइक ओ यू नो व्हाट, मेरा अपना पीस कहाँ गया. तो Hmm. दैट हैपेंड टू मी इन पैंडेमिक. So जब COVID आया, I think I was home alone. I was locked alone in Gurgaon in a flat, and after that I just felt that ये सारी चीजें तो मैं कर लूंगी लाइफ में, but I need to gain more wisdom. And yeah, I just set off on a journey all by myself, solo, Okay, so and next question that came in my mind is related to what you are talking about. Like, I know hundreds of girls who are traveling solo right now. The main thing that makes you different ना, वो ये है कि आपकी जो थीम है वो. Like, मैं एक ऐसे सोलो ट्रैवलर को जानता हूँ जो ऑफ बीट ट्रैवल करती है. मैं एक ऐसी सोलो ट्रैवलर को जानता हूँ जो सिर्फ वैलीज ट्रैवल करती है. मैं एक ऐसी ऑफ बीट ट्रैवलर को जानता हूँ जो सिर्फ फोटोग्राफी करती है या फिर वो सिर्फ बर्ड्स देखने जाती है. बट मैं ऐसी किसी सोलो ट्रैवलर को नहीं जानता था जो ट्राइबल से मिलने के लिए ट्राइब से मिलने के लिए ट्रैवल करती है. तो हाउ yeah. डिड यू स्टार्ट सोलो ट्रैवलिंग फर्स्ट? इसी में इंक्लूडेड है हाउ हाउ डिड यू चूज दैट पर्टिकुलर थीम कि मुझे ट्राइबल्स एरिया में ट्रैवल करना है? I think tribal belt happened much later, but हाँ शुरू में you know till my MBA मैं अपने friends के साथ travel करती थी, but since my job involved a lot of auditing and traveling to छोटा छोटा cities, जैसे कि आप मान लो इंदौर हो गया, या तो उसके इंदौर के आगे कहीं पेट्रोल stations हैं तो I'm going for inspection. तो you know like rural India became something that I started getting थोड़ा comfortable, and then I realized that you know this is where a majority of our information heritage culture lies. You know, हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं शहरों में बैठ के that oh you know what, we are so educated, we know everything, but trust me, I think rural India, which forms like about 54% of the population of the country, that's where our value lies till today. No matter how you know advanced we may become in technology, but that's where our you know real value, culture, heritage सब कुछ है. So then I started traveling to a lot of rural India. शुरू में I started traveling to places in Rajasthan only. तो मुझे जब भी टाइम, because I was posted in Delhi, तो मैं राजस्थान में ऐसे नहीं जाती थी कि जयपुर जोधपुर. And I'm going to tell you guys a hack. All you girls are listening to me. One hack that I have adopted, and आप लोग मुझे थैंक यू बोलना बाद में. तो मैं ऐसा करती थी कि ओके देयर इज वन वे कि आप जयपुर जोधपुर ट्रैवल कर लो, बट आपको रियली ऑफ बीट करना है तो आप क्या करोगे. तो मैं ये कभी कभी शेयर करती हूँ किसी लाइव पे कि आई यूज टू लेट्स से टेक अ ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू जोधपुर. ठीक है, तो ट्रेन Wow. स्टार्ट हुई रात को फ्राइडे नाइट दिल्ली में 10 बजे, एंड इट हैज टू रीच जोधपुर एट 6 AM. तो 5 बजे जो भी स्टेशन आता था 2 घंटा पहले या 1 घंटा पहले मैं उस पर उतर जाती थी. ओके, Wow. नाउ माई टारगेट इज दैट संडे मेरी ट्रेन वापस है जोधपुर से बैक टू दिल्ली बिकॉज आई हैव टू गेट बैक टू जॉब. तो इस 2 दिन में आई हैव टू ट्रैवल ऑल द विलेजेस दैट कम टिल जोधपुर एंड कैच माई ट्रेन बैक. Wow. And that's how I started observing a very different rural India that was never on Google, because वो तो छोटे छोटे गांव होते थे तो वो लोग मुझे रख भी लेते थे. And you know very early in my solo travel I started getting used to using public lose. फिर I think tribal travel happened much later, जब मैं इतना Okay. comfortable हो गई staying in rural belts for very long that I felt कि इंडिया में इतने क्लस्टर्स हैं जो कि बिल्कुल कटे हुए हैं. They are dependent on forests for their living. Why don't I document them? Why don't I visit that? So you know it was like एक करके. So I hope that all the girls who are listening, you know, if you want to solo travel, you can really try this hack and start getting comfortable, like slow and consistent. So yeah. Exactly. So, you know,
because being a teacher, I study a lot about tribes and all. और मेरा ये क्वेश्चन ये है कि how has your experience been with tribes in India? Because there are lots of misconceptions about them. हम stereotype बहुत करते हैं उन लोगों को. तो overall क्या रहा आपका? नहीं नहीं मैं I don't think मेरे साथ कभी कोई ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है. हाँ, वियर्ड चीजें बहुत हुई है मेरे साथ, बिकॉज जब हम ट्राइबल इंडिया की बात करते हैं तो वो दो पार्ट में डिवाइडेड है गाइज. एक है कि ट्राइब्स जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, एंड देन देयर आर उसी ट्राइब में, तो लेट्स से जो हम 10th में सेट सबसेट्स पढ़ते थे, तो देयर आर ट्राइब्स, एंड उसी के अंदर एक छोटा सा सबसेट है दैट इज कॉल्ड PVTGs, which is particularly vulnerable tribes. यानी कि ये वो ट्राइब्स हैं इंडिया में जिनको अलग से ऐसा दर्जा दिया गया है दैट दे आर कंप्लीटली स्टिल लिविंग इन अ वेरी नेटिव वे. लाइक वो लोग शायद कपड़े नहीं पहनते, बीड्स पहनते हैं, वो आज भी जंगल में ही रहते हैं, वहां तक कोई रोड्स नहीं गई है. लाइक जरावाज इन अंडमान इज अ गुड एग्जाम्पल बिकॉज वहां बहुत टूरिस्ट जाते हैं. सो जरावा इज आउट वन ऑफ द 62 PVTGs इन इंडिया. तो जब मैं उड़ीसा झारखंड ट्रैवल करी थी, छत्तीसगढ़, आई रियलाइज दैट उड़ीसा एज अ स्टेट has 23 PVTGs in a single state, which people did not know about. And I just kept traveling, and I think जहां तक एक्सपीरियंस की बात है जुबैर, तो आई थिंक वो लोग इतने बेसिक होते हैं. हाँ, उन लोगों का प्रॉब्ली रहने का तरीका हमसे बहुत डिफरेंट होता है. वो आज भी हंट करते हैं, कई ट्राइब्स आज भी हंटिंग पे डिपेंडेंट है, क्योंकि उनके लिए ऐसा होता है. एंड बहुत लोग मुझे बोलते हैं, ओ यू नो व्हाट, दैट इज हंटेड, डू यू नो दिस इज इलीगल. आई एम लाइक, जितने लोग वो हंट करने जाते हैं वहां पे जंगली जानवर उनको भी खा जाते हैं. तो इट्स लाइक अ साइकिल. They don't believe in that we are hunting. They feel that we also get hunted, we also hunt. It's like, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे शायद परमिशन होती है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ट्राइब्स को कि वो हंट कर सकते हैं, जहां तक मुझे ऐसा. करेक्ट. एंड आई थिंक उनको थोड़ा सा अलग भी रखा जाता है. जब ये मुझे याद है कोविड आया था, तो क्योंकि वो तो अंदर जब सेकेंड राउंड हुआ कोविड का, तो इट स्टार्टेड पेनिट्रेटिंग बहुत डीप विलेजेस में. आई डोंट नो ये कैसे हुआ था. फर्स्ट तो बिल्कुल कोई गांव टच ही नहीं हुए थे, सब कुछ सेफ था जब पहला कोविड का वेव आया. बट सेकंड के बाद तो वैक्सीनेशन वगैरह बिकेम अ बिग प्रॉब्लम इन दैट बेल्ट, बिकॉज लोगों को बहुत डर रहता है कि अरे कुछ लग जाएगा तो हम जंगल में कैसे जाएंगे, हमारा तो एंड द लैंग्वेजेस. So I think for me it has been like a khazana, that wow, there are things like this, there are people like this who are still living and not spoken. And I feel that if a solo girl travels, which is also another thing that I want to share to all the girls, if a solo girl travels with a lot of intent, people take you very seriously. There is a difference कि अगर सपोज मैं जुबैर के साथ जाऊं एज अ फ्रेंड, या मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊं, people will view you differently. If you are traveling solo as a female, people will always feel कि ये कोई मजे करने तो नहीं आई, ये definitely किसी अच्छे मोटिव से आई है, and they help you. So I think that's one thing that I want to share. Really. Okay, so next one जो था, ये मतलब ये समझ लीजिए मेरा पर्सनल क्वेश्चन है. We create lots of comfort zones around us. ठीक है, लाइक मेरा कंफर्ट जोन है कि मुझे रोजाना टीचिंग करनी है, मुझे इस 6x7 के कमरे में रहना है, ठीक है, लाइव जाना है, इससे ठीक है. ये कंफर्ट जोन है, इसमें मजा आता है कंफर्ट जोन में. मतलब was it difficult to leave corporate for you? How did you manage it? Because it's so hard. I know personally. I have lots of offers, और बहुत अच्छे offers कि सर यहाँ आ जाइए पढ़ाने के लिए, और वो comfort zone ना छोड़ा नहीं जाता है. How did you manage? How can it be possible for a girl to leave that corporate job जो आपको इतना कुछ दे रही है? I know. हाँ. नहीं बहुत टफ है भाई जुबैर, बहुत टफ है. I mean, I cannot tell you, because when I left, there was this brand Vajor I was heading. It's a fashion label. I was almost at the top of my career. Like, I was a head HR in my previous company. I was a business head with this particular brand. I had like close to 300 people reporting to me. It's like a mix of power, money, jo bhi keh lo. It's a mix of that. And when you get used to affording things you always wanted, मैं कभी सोचती नहीं थी कि मुझे फ्लाइट बुक करके कहीं जाना है. मैं सिंपली वीकेंड पे फ्लाइट बुक करती थी, वहां से उतरती थी, कैब लेके किसी गांव में जाती थी,
And it's very easy to do that when you, so when people say, oh, you know what, money is everything, it's a but then when I left it and when that decision was happening, मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ. तो ऐसा हुआ कि I was taking this महिंद्रा की जर्नी across India and it was a sabbatical. that time तक मैं sabbatical पे थी. तो अब वो जर्नी खत्म हुई 2021 जुलाई में and I was at this juncture कि गुड़गांव में वापस जॉब पे जाऊं कि you know what do I do, because तब तक मेरा दिमाग तो एकदम you know it was like oh my god I want to do something with rural India, but my mind was not prepped क्योंकि mind तो comfort zone में था like you said. तो I got this amazing job offer also and I went, I still remember मैं जयपुर से इंटरव्यू देने गई अपने पेरेंट्स के यहाँ से and the interview was clear and they said okay we want to give you this HR head role, amazing money, everything, like the best of the thing you, and I don't know what happened to me. I said yes that okay we will come back and then I don't know मैं गाड़ी चला रही थी जयपुर आने के लिए, something happened and I went to a salon and I said कि you know आप please मेरे ना बाल shave कर दो. So he was like are you sure? I said yes please shave my head. So he said कि नहीं मैं shave नहीं करूँगा, मैं आपके बाल छोटे. That was where I chopped off my hair. I was like I need some clarity and वो clarity कैसे आएगी, तो maybe I should do something drastic. So you know it was like a move to push me कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा काव्या, you will lose some 2-3 years, maybe you will fail but you will always come back to doing probably a job. So I think that was my turning point. उसके बाद से I was like अब जो भी करना है I have to just set off and I started from scratch एकदम. You know when I decided to relocate to Odisha I had no friends, no contact, like even not even probably one Instagram contact maybe, that's it. Like I still remember when my truck reached there, there was a monitor lizard in my jungle house. Like I had no one, I was managing everything, but I think now I feel so happy कि ऐसा हो गया. And it, yeah, every day is a learning. So yeah, थोड़ा सा बस push करना है अपने को. Okay, so इसी से related ये like I know some girls, ठीक है, who want to start their own companies like related to traveling and all, लेकिन वो पहले से corporate में हैं और they can't डिसाइड कि हम ये छोड़ दें, वो कंफर्ट जोन से नहीं निकल सकती हैं. तो एक क्वेश्चन जो उनके मन में चलता है हमेशा कि हाउ विल दे मैनेज वो पैसे वाला पार्ट. तो इन स्टार्टिंग हाउ डिड यू मैनेज टू अर्न दैट पार्ट, बिकॉज आप कॉर्पोरेट में तो आपका हाथ भी खुला है, ठीक है, बहुत खर्चा है वो मुझे भी पता है कि कितना खर्चा करता है मुझे, ठीक है. तो आपने वो कैसे मैनेज किया, उसके बाद मैं आपके रेवेन्यू सिस्टम पर आऊंगा. पहले वो क्वेश्चन You know, आज जुबैर मुझसे सारे टफ क्वेश्चन पूछ रहा है. That's the main motto because you know I decided that new heights to horizon. अब जब आप उस heights पे पहुंचे तो फिर क्वेश्चन भी उसी लेवल के. I know, but पता है ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है जो हम नॉर्मली लाइव पे डिस्कस नहीं करते, but I'm sure कि हम ये रिकॉर्डिंग when I'll share I'll actually put that this has questions that grills to the like these are real things that we actually you know I have faced. तो टू आंसर इट शॉर्ट में, जब मैंने अपना एक काव्या ऑन क्वेस्ट एक जर्नी है जो मैंने लिया था, तो जब मैंने वो पैंडेमिक के बाद शुरू किया था 2 अक्टूबर 2020, आई हैड अबाउट 5-6 months of my salary in the bank. Okay. Maybe a little more, I will say. A little more and मेरा PF. तो कई लोगों के पास अब सपोज आपको कुछ भी स्टार्ट करना है, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरा बेंचमार्क लेके चलो, आप अपनी अर्निंग के हिसाब से जितना आपका खर्चा है आप फील करते हो महीने में, उसके हिसाब से एटलीस्ट सेव 6 months इन योर बैंक अकाउंट. ये तो है ही. बिफोर दैट आई विल नेवर रेकमेंड, and I don't want to criticize also Zubair, but there's this whole new trend, you know, travel the world and you know lose yourself and leave your job, travel. I never say and I never advocate that. Yes, you travel the world. इसमें एग्री कर सकते हैं बिल्कुल. मैंने देखा है लोग अपनी कॉर्पोरेट जॉब ऐसे ही छोड़ देते हैं ट्रैवल के लिए, लेकिन जैसे ही ले जाते हैं समझ आता है भाई ये हाई एल्टीट्यूड हमारे लिए नहीं है, वापस चलो. तो एकदम से बहुत जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया जा सकता ऑब्वियसली. I mean take it slow. तो मैं बोलेंगे अपना सिक्योरिटी बना के चलो. This is especially not just for guys. I mean not just for girls but even for guys. Sometimes we do get carried away and चीजें आती. तो मैं ऐसा नहीं कह रही कि अच्छा 6 महीने की सेविंग नहीं है तो आप एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकते. I mean today if you start without any security, probably 1 year down the line आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी. बट ये जो 1 साल का टाइम होगा ना, you will get burnt up.
एंड इस बर्निंग अप में बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं. तो आई डोंट वांट दैट वी रीच दैट लेवल, एंड जस्ट फॉर दैट टाइम कि आज आपने कुछ स्टेबल छोड़ के फ्रीलांस किया, इस टाइम पे अच्छी अपॉर्चुनिटी आने तक आप बैंक में कुछ डाल दो. दैट्स ऑल इज समथिंग दैट आई फॉलोड. So yeah. So one of my students saw your account and she saw all of your post, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन मेरी मैसेज बॉक्स में ये था कि how did she earn money? What is her revenue system? So make us understand your revenue system. How do you earn money? What do you actually do? What does Kavya do? ठीक है, क्योंकि वो पर्सनली मुझे भी समझ में नहीं आया कि क्या करते हैं आप वहाँ गाँव जाकर और किस तरह से वो पूरा आप मैनेज कर रहे हैं. Yeah. I think एक तो ये idea है that you've given me that if you feel that you have not understood, then maybe मुझे कुछ तो रील या कुछ तो बनाना चाहिए इस बारे में. Exactly, because I saw you on really big stages, मतलब गवर्नमेंट के स्टेजेस पर, लेकिन वो मैं समझ नहीं सका. ठीक है कि हाउ वो कैसे. Yeah. But also because Instagram is just a place to showcase the good things, yeah, guys. है ना, ये आप हमेशा याद रखना कि जब मैं बहुत लो हूँ या मेरे बैंक में एकदम पैसे नहीं, तो मैं वो तो स्क्रीनशॉट लेके डालूंगी नहीं. I'll always show, what, I'm here, I'm there. But to just break it down, this is again something I follow. Again, it is, you are free to take decisions, but मैं हमेशा एक चीज बोलूंगी कि जैसे अंडे होते हैं ना, उसको एक बास्केट में नहीं डालना चाहिए, बिकॉज अगर वो बास्केट टूट गई सारे अंडे फूटे. इट्स लाइक दैट. सो आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन दैट यू नीड टू पुट योर एग्स इन डिफरेंट बास्केट सिंस बिगिनिंग. आई नेवर कॉल माई सेल्फ अ कंटेंट क्रिएटर फुल टाइम बिकॉज माई इनकम डजंट कम फ्रॉम मेकिंग कंटेंट और Instagram. Let's put it like that. Then how do I actually earn money? Especially the time कि मेरा जर्नी जब खत्म हुआ तो ऑलरेडी मेरे बैंक से काफी पैसा निकल गया था क्योंकि that journey was self-sponsored. And then I had to start from scratch. So then I decided that I am good at 2-3 things. Number one, I can get some brand collabs by my content because I am able to create okay content. If not 100K type, कुछ तो मेरे पास आ ही जाएगा, which can help amplify my social. So I started creating reels, this, that, थोड़ा थोड़ा अपने पुराने travel का. Next thing, I realized that I was good in teaching because I had industry experience. And then I reached out to people, and currently I'm teaching at 3 colleges, IHM Delhi, Bhubaneswar, and XLRI, all on rural entrepreneurship, and which is really interesting. That helps me pay my every month के bill. So वैसे भी मैं ऐसे गांव में हूँ. अब आप ये सोचो कि आप फ्रीलांस कंटेंट क्रिएटर बनके गुड़गांव का एक प्लश अपार्टमेंट अफोर्ड कर लो. Maybe it will surely happen after 5 years of your creation or 3 years of your. But when you're starting out, you will have bills to run, but income इतनी नहीं आ रही होगी. So then you have to create different streams. So one is definitely teaching. The third is that I'm associated with an academy based out of Singapore. I think Zubair is a part of the community. So we also have some classes around that. That is also another source. And the fourth source is that मैं जितने भी गाँव में जाती हूँ, कुछ गाँव में जहाँ पे हम लोग particularly काम कर रहे हैं, when I say हम, it's like मैं और मेरे साथ के village के लोग, we try and curate certain products working with tribal people and put them out for customers to buy or institutions to buy or government to buy, which is like bulk order. So that also 30% of that revenue is with me and the 70% goes back to the villages. So these are my 4 income streams. And around that, मेरा जो बेसिक खर्चा है, वो मेरा खर्चा जो गुड़गांव में होता था, आई थिंक जुबैर ने बोला कि जब आप कॉर्पोरेट में होते हो तो खर्चे भी वैसे होते हैं, चादर एकदम फैल जाती है. But when you're in the village, your खर्चे are not that much. Like I don't have a single AC in my Odisha home, and I feel bad about it now, but it's okay. तो I think मेरे ये चारों revenue से ऐसा हो रहा है that I'm able to travel little bit, and I'm also able to take care of my monthly bills. अब क्या मेरे पास बहुत मनी है? No, because it's just been like 2 years. I have been all by myself, so I think it will just build up. Yeah. कि आपको मतलब does it sound practical to you, Zubair, now? No, it sounds practical. People often ask that same question to me कि आप क्या टीचिंग से ही पैसा कमा रहे हैं? तो अभी जैसे मैं लाइव करूं, मैं बताता हूँ कि मैं खाली टीचिंग से नहीं नहीं कमा रहा हूँ पैसा. ऑब्वियसली मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, आई राइट ब्लॉग्स, आई राइट पोएम्स, आई मतलब मैं जैसे अब ये मैं होस्टिंग कर रहा हूँ एक तरीके से, तो वो पेड होस्टिंग भी करता हूँ. तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं,
ठीक है, देयर आर Yeah. लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हो रही हैं। तो वो अगर आप, वो बोलते हैं ना, जैसे बड़े बूढ़े बोलते हैं कि एक जगह से पैसा नहीं कमाया जा सकता, तो Yeah. आई या थिंक जो हम नहीं, एंड आई थिंक ये जो पहले तो ऐसा होता भी था कि हमारे मम्मी पापा हाँ, एक ही कंपनी में काम करते करते रिटायर हो जाते थे, बट इन टाइम्स हम्म, लाइक टुडे इफ यू वांट टू बी हम्म, अ फ्रीलांसर, आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू डू 2-3 थिंग्स व्हिच इज ओके, एग्जैक्टली। एज अभी भी लॉन्ग एज मुझे यू कैन। सबसे, या हाँ, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम इन अ मैरिज, ठीक है ना, वेडिंग फंक्शन, और कोई रिश्तेदार मिला, क्या करता है आपका बेटा? फिर पापा कहते बताओ क्या करता हूँ, मैं कहा, यार क्या बताऊँ मैं क्या करता हूँ? तो फिर मैंने कहा मैं टीचर हूँ मैं वहां पर उसे रोक देता हूँ, बिकॉज यू कांट टेल कि मैं ये सारी चीजें करता हूँ, कुछ उन्हें समझ में भी नहीं आएंगी, तो ऑब्वियसली वो है। Yeah, yeah. लेकिन No, बिकॉज no, that's माई, there. मैं आपको बताती हूँ Zubair on this that my father used to initially feel very bad. I mean, imagine उनकी बेटी पहले पब्लिक सेक्टर कंपनी छोड़ दे, देन कंपनी में काम करना ही छोड़ दे, चलो कर लेंगे, टिपिकल इंडियन उसके बाद पेरेंट्स लग गांव जाते हैं। शिफ्ट हो जाए, उसके बाद गांव में हाँ, कहीं शिफ्ट हो जाए, वो भी इन अ वेरी ट्राइबल काइंड ऑफ बेल्ट आउट ऑफ राजस्थान. So initially it was like shock पे shock. It was like that. हाँ, But now I see in his own eyes that there's a consistency that every time I'm doing work, कुछ cover हो जाता है, कुछ I put it out for people to see. So slowly he's also believing that whatever she's doing, she is totally believing in it. So I think उसमें time लगता है for this because टाइम, you have a lot of students also here hearing us. But it does happen. So keep doing it consistently, and people will believe in you. So yeah. एग्जैक्टली। सो बिकॉज यू वर्क इन हैंडीक्राफ्ट, यू नो, और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बड़ा शौक है हैंडीक्राफ्ट का, और मुझे भी, बिकॉज वेन एवर आई ट्रैवल, ठीक है, आई डेफिनेटली स्टॉप बाय एट अ हैंडीक्राफ्ट शॉप। उसका फ्यूचर क्या है? व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स इन इंडिया? डू यू थिंक इट विल रीच एट न्यू हाइट्स, या फिर ऐसे ही रहेगा जैसे चल रहा है अभी? Because I know there are lots of people like you, मतलब who are doing some amazing work ठीक है, क्योंकि obviously मैं, जैसे मेरे आसपास भी, मेरठ, you know, मेरठ is famous for क्लोथ्स, वो ब्रास का कपड़ा काम. बुनने, या हाँ, ठीक है, एंड वो मेरठ में कपड़ा बुनने कपड़े का भी काम बनते होता है। हैं. यस, हाँ हाँ, कपड़े ब्रास का बुनने का, तो काम मैं भी देखता होता हूँ है. कि बहुत सारे लोग हैं, कारीगर हैं जो काम कर रहे हैं, बट दे डोंट नो कि उसे अमेजन पे कैसे सेल करना है, उसको फ्लिपकार्ट पे कैसे सेल करना है। तो क्या कुछ बदल सकता है? आई थिंक हैंडीक्राफ्ट का वैल्यू बहुत ज्यादा है. नॉट मेनी पीपल नो दिस कि एग्रीकल्चर हमारे इंडिया का हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है. मतलब कि सबसे ज्यादा नौकरियां एग्रीकल्चर से जुड़ी हैं. बट लोगों को शायद ये पता नहीं है, जो कि मैं बता रही हूँ, कि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट area of this country. वाह, It's not industry, it is not service, it is not corporate jobs, it is handicrafts. And it is so surprising because people don't know it. And why people don't know it? Because it's so unorganized. While agriculture has a lot of policies, ministry now is definitely, government is pushing a lot on vocal for local and handicrafts, but उसमें policies नहीं है कि artisan को इतना payment मिले, या आर्टिसन के क्लस्टर्स को इतना ट्रेनिंग तो मिनिमम मिलना चाहिए. वो हर स्टेट पे अपना ही एक अपना पॉलिसी चलता है. सो नाउ स्कोप, yes, we have a lot of scope because so much is getting out in terms of exports. In fact, foreigners तो भाई इंडिया की ही हैंडमेड चीजों को इतना वैल्यू देते हैं जो कि इंडियंस बहुत, खुद नहीं देते. They वाह, want to spend money on that and there's no limit to that. So handmade things have amazing scope within India and outside. The second thing ki how do we take it ahead? There are a lot of lines that needs improvement. Number one ki government needs to push a very structured way of tracking. Like policies introduce होती है but वो track नहीं होती. आज भी अगर आप जुबैर खुद ऐसा बोल, आप किसी अपने स्टूडेंट को बोलो कि एक गांव में साड़ी बनती है, अब तुम उस गांव में ट्रैवल करो और जाके देखो कौन है, उसको कहीं गूगल पे समझ ही नहीं आएगा क्योंकि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं. And that is a big gap, that when it comes to crafts, which is like such a huge sector, there's hardly any info on Google. So you only have brands that are selling handmade products and some stories that government pushes. That's all. It ends there. There's no info that इस गांव में ये काम होता है, इस गांव में अगर आप जाएं तो ये artisan मिलेगा. There's nothing like that available. And as a result of that, now what is happening is that let's say Zubair एक artisan है जो wood पे बहुत अच्छा काम करता है, and Kavya is Zubair's daughter. Don't take it otherwise, just for example. तो यार मैं देख रही हूँ कि यार मेरे फादर पूरी लाइफ टाइम से वुड का काम कर रहे हैं, आज भी वो आर्टिसन ही है
उनके सोशल स्टेटस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया। हाँ, उनको नेशनल अवार्ड मिल गया, स्टेट अवार्ड मिल गया, बट टिल टुडे हिज सोशल स्टेटस हैज नॉट इम्प्रूव। आई डोंट वांट टू डू दिस जॉब, आई विल रादर गो टू कॉर्पोरेट। So that is what is एग्जैक्टली। happening, you know, that वो crafts आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, and that is a big problem in India right now. That how to एक्चुअली मैं get यहाँ पे कुछ ऐड youngsters. कर मैं यहाँ पे कुछ ऐड करता Yeah. हूँ। यू नो माय सरनेम इज सैफी। तो सैफी होते हैं बढ़ई, जो लकड़ी का काम करते हैं, ठीक है, लाइक यू Oh, सेड। हाँ, तो तो आई मुझे नो पता नहीं था, but okay, great. माई कास्ट क्रिएट्स लकड़ी का सारा सामान, ठीक है। तो जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो मेरी वाली जनरेशन है, उन्होंने देखा वही कि वो सोशल स्टेटस बढ़ नहीं रहा है, दे लेफ्ट। अब वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब वो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं। कुछ ऐसे रहे लोग जिन्होंने अपने पापा के काम को बहुत अगले लेवल पर पहुंचा दिया। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक रिश्तेदार हैं, तो वो वुड वर्क किया करते थे हाथ से, ठीक है, बिल्कुल एकदम ट्रेडिशनल तरीके से। उनका बेटा, उनके बेटे ने पढ़ा, अब वो एक्सपोर्ट करते हैं। उनका एक Wow. बहुत बड़ा प्लान है, तो वो हो रहा है। हाँ, वो हो रहा है, लेकिन वो Yeah. बहुत बड़े लेवल पे नहीं है। तो हैंडीक्राफ्ट Yeah. बदलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो कुछ लोगों तक रह जाएगा, सबके हाँ, पास एंड नहीं आई होगा। थिंक बहुत जल्दी जल्दी अब क्या होता है कि ये जो आर्टिसंस थे जो ट्रेडिशनली इस क्राफ्ट को हाँ, हमारे फोर फादर्स आगे लेके जाए, वो भी तो ओल्ड हो रहे हैं ना। सो आई थिंक हम्म, you know that brain drain is happening because the knowledge is not getting transferred to younger population, and younger youngsters are population, getting more gratification working in other sectors than craft. other- So, you हम्म, know, yeah. Rohita says foreigner have their shops in Jaipur. They are giving their Jaipur inspired patterns to karigars and sending all over. Yeah, I think lot of layers are there. You know, Zubair, जब हम craft की बात करते हैं कि हम किस तरह से जो नैरेटिव्स हैं, स्टोरीज हैं, उसको जो हम्म, एस्थेटिक लगता है उसको पुश करते हैं। लाइक अगर हम हम्म, जयपुर की बात करें तो जयपुर में यू नो यू हैव दिस ब्लॉक प्रिंट्स, बट हाँ, our block prints were never restricted to Mughal prints. You know, it was very earthy lines, triangles, हाँ, circles. You know, हम्म, वो कोई भी नहीं पहनना चाहता। Everyone wants to wear booties and pretty pinks and you हम्म, know. हाँ, So ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि किस तरह से हम stories को भी intact रखें, and impact. yeah, there's just lots to be done. I think मुझे तो 2-3 जन्म लेने पड़ेंगे आई if I थिंक वी have to विल बी keep एबल doing. टू अपहोल्ड दैट थिंग, ठीक है, हम Yes. बचा लेंगे अपनी विरासत को, ठीक है, आई होप। सो एक क्वेश्चन है, यू नो, बिकॉज यू आर सो प्रिविलेज्ड कि यू आर ट्रैवलिंग, ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ गर्ल्स हु आर अंडर पेट्रियार्की, लाइक इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है, लाइक इन यूपी, ठीक है। एनी एडवाइस फॉर गर्ल्स, हाउ कैन दे ब्रेक दैट पैट्रियार्की? अगर उन्हें घूमने जाना है, वो कैसे अपने घर में शुरुआत कर सकते हैं कि अपने पापा या भाई से वो इजाजत मांगने के लिए? वैसे पहली बात तो वो इजाजत ले, मतलब जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए उसकी, Yeah, लेकिन क्योंकि पढ़ yeah. रही है लड़कियों को, हाउ? No, it's a very practical question. हाँ, In fact, मेरा भी ऐसा नहीं था कि मेरे पेरेंट्स बहुत ही I'll not say open-minded, but ऐसा नहीं था कि I was like कि जॉब है तो I can just move around. They were never comfortable. To date, they are not comfortable. Over time वो ऐसा हो गया कि उनकी आदत हो गई है देखने की. हाँ, But I also come from a very conservative background. But then I also feel that there are a lot of girls in smaller towns than me. एंड मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। एक मेरी इंस्टाग्राम फॉलोअर देवव्रती, वो तो बंगाल के किसी एक बहुत ही मिडनापुर एक एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में, एक छोटे से गांव में रहती है। तो आई वुड से दैट इफ इट्स वन एडवाइस दैट हाउ कैन यू स्टार्ट, कि अगर आपके पास ऐसे थोड़े से रिस्ट्रिक्शन है सोशली, फैमिली वाइज, जो आपको रोकते हैं, I will say just start small. It can be as simple as start to explore your own city. I started like that. It was like अगर आप मेरठ में हैं या आप लखनऊ में हैं, start documenting your own शहर. I have done that. So जब मैंने actually solo travel start किया, मैं दिल्ली में posted थी. I used to take old Delhi में walks. I used to go. तब मुझे पता चला कि जो हम पुरानी दिल्ली बोलते हैं वो actually सबसे नई दिल्ली है. You know, in historically, but the oldest part of Delhi is towards the Qutub Minar. That was the oldest settlement. तो ये सब जब मैं एक्सप्लोर करने लगी, फोटोग्राफ्स, एंड थोड़े थोड़े ऐसी चीजों के लिए आपको शायद इनिशियली थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो, फिर आप बोलो नहीं मुझे 1 घंटे में 2 घंटे में मैं वापस आ जाऊंगी, then you start documenting, putting it out. When there'll be, you never know, you may get a collab out of that city exploration. उसके बाद आप थोड़ा सा बढ़ के बोल सकते हैं, oh you know what, मैं 1 दिन में वापस आ जाऊंगी. तो it's like सीढ़ी सीढ़ी चढ़ के, इट्स बेस्ट है। yes,
if you say tomorrow that, oh, you know what, I am going solo traveling for 10 days, many families will be like, no, we don't want to allow such kind. So I'll say just start small and keep doing it year out. I mean, एक और चीज मैं आपको बता रही हूँ, बट आप लोग कभी ऐसा मत करना. एक मेरे साथ ऐसा हो गया था एक पॉइंट पे, ऑब्सेशन टाइप का, कि होली दिवाली एवरी वीकेंड, क्योंकि मुझे वीकेंड नहीं मिलता था जॉब के साथ, मैं ट्रैवल कर रही होती थी, ट्रेन में होती थी, तो माय मॉम वाज लाइक, ये क्या तुम्हारा नया ऑब्सेशन है कि तुम हर वक्त ट्रैवल करती रहती हो. तो आई वाज लाइक, बट उन्होंने देखा कि मैं सालों तक यही करती रही एवरी वीकेंड. So after a while they got used to it, you know. So I'll just say कि don't be like me, don't skip festivals, but छोटा छोटा, and I'm sure that it will start opening up. So yeah. एक मतलब being a traveler, मुझे तो पता है India is safe for solo travelers, yeah. like solo. आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से, is India safe for girls? Is India safe for solo travelers? I think yeah. I think मैं तो कभी नहीं कहूंगी कि मेरे साथ, इनफैक्ट मेरे साथ कभी टचवुड कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ नहीं है. मैं ऐसे कुछ टॉपिक पे बात करूं तो यहाँ पे मुझे लगता है बहुत सारे बैड कमेंट्स आ जाएंगे, बट Zubair, if you allow, I'll be utter honest. If you allow me to, you know. So देखिए, हम लोग कितना भी बोले कि ओ इट्स अ फ्री वर्ल्ड, कई बार you know some निगाहें we may not like, some unwanted, you know, people looking, we may not. So what I try to stick to is, when you are in Rome, be a Roman. So I'm not again commenting on people on dressing. I can just share जो मेरे लिए काम किया है, what has worked for me. When because I travel all the time into rural belt, I don't look odd. So I'm not saying don't wear shorts. I don't wear shorts. I wear something that is very comfortable. It can be a skirt, because that skirt can be a conversation starter. कि अच्छा ये बांधने, अच्छा मैंने इस गांव से लिया था. It generally helps me open up to people, you know. But it is something that has worked for me, that I try to be one of them. You know, अगर मैं चाय भी पी रही हूँ, तो I try, and चाय के टपरी is my biggest spot to get contacts. I sit with the men कि अच्छा भैया एक चाय दे दो. I try and be very natural. Second thing, which can keep you safe, is don't come out with an agenda कि मैं आई हूँ, मुझे फोटो लेना है और मुझे निकलना है. People start to just take you as an outsider. Yes. So I will say कि wherever you are, the first hour or two, if you are tight even on your time, don't take out your camera. Just try and observe, and then once you strike conversation with even one local, he will be more than happy, he or she, to take you to a gaon. You can take as many images, photos, whatever, because वो जाते कैमरा देख के लोग होता है, अच्छा ये तो कौन आ गया, outsider, okay, you know, they just perceive you very differently. So again, that is coming out of experience. And some, मैं तो कोई ऐसा चाकू वाकू अपने साथ नहीं रखती हूँ. I don't carry. मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको सिंपल एक काम करना है एज अ ट्रैवलर, कि जो वहां के ट्रेडिशन है आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है. सब अच्छे हैं इंडिया में, सब अच्छे हैं, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे, बड़े, इतनी वार्मथ नहीं मिलती है कहीं पर भी जैसे इंडिया में मिल जाती है गांवों में जाकर. तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ. आई एम एन एथीस्ट, आई डोंट बिलीव इन गॉड, ठीक, लेकिन जैसे अब मोस्टली ट्रैकिंग में मंदिर है इंडिया में, मोस्टली ट्रैकिंग में मंदिर, तो मैं जाता हूँ वहां पर, लोग कुछ कर रहे हैं, मैं खड़ा हूँ वहां पर, ठीक है. तो क्योंकि ठीक है, उनका एक वो है, तो मैं वहां पर, वो रेस्पेक्टफुल रहेंगे उनके ट्रेडिशंस के लिए. तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई भी प्रॉब्लम है ट्रैवलिंग करने में. और आई थिंक अगर आप नहीं कर रहे तो आप कुछ खो रहे हैं. And it's very safe. I mean, trust me, guys. I have like traveled from the remotest corners of Nagaland, Arunachal, Manipur to every part, but never ever encountered any untoward, because you just come with open intention. And I think हाँ, ये एक और बात है, जैसे हम शहरों में और गाँव में क्या डिफरेंस होता है. शहरों में लोगों के पास बहुत लेयर्स होती हैं, you know, there are layers of security, relationship, tensions, traffic. But people in villages are very black and white. They can guess your intentions in 1 or 2 seconds. Like if you have a good intention, they will talk to you. If they feel that, oh, you've come with an agenda, they will talk to you like that. You know, so just go with a very clean heart that, okay, I'm just there to absorb.
maybe, talk to you guys, just spend some time with you, and they will automatically open up. And I think that really works for me. So एक चीज I और, agree. I Yeah. read about कि you love, ठीक है, motor cars and all, you drive a lot. So Yeah. uh, what are you driving right now? ठीक है, which car do you have? ठीक है, और you have some plans about cars and all Ah, कि आपको इन्वेस्ट करना है क्या, ऐसा कुछ? I think ये तो ऐसा मेरा I think this hobby came because of a friend. I was in Rajasthan that time and I used to travel. जैसा मैंने बोला था, मैं खुद अपना state explore करती थी अकेले. So I met a friend who introduced me to motorsports in India, and eventually I ended up having a license to sort of do cross country. So initially तो उसमें I used to use my friends की gypsies, rally prep. And I could never invest because I never had that much money कि मैं इतनी बड़ी SUV कुछ खरीद लूँ. Obviously, with time, जब मैं full time job में थी, तो I could afford a big SUV. But then, again, what happened that SUV needs that much money. It's like हाथी पालना. So it used to take a chunk of my salary. So I thought कि okay, now how do I need to travel, but I have to feed this hathi. So then I thought, okay, hathi ko bech do so that my travels are fed. So then I ended up buying a very comfortable sedan. I have a Baleno high end, which is very comfortable to go around. But what usually happens is now, because I used to race for good, I would say 3-4 years actively between the period of 2014 to 19. So abhi kya hota hai ki sometimes I get a lot of collaborations, like I would get collabs from Mahindra, which is one of my longest partners. Like Kavya on Quest ki bhi main baat karun to guys, normally a big automobile brand doesn't give a car to any solo person for months together because unke brand pe bhi ek baat aati hai. But they were very confident that, and this goes out for everyone, that if you want to really go driving and solo driving and things like that, the first thing is please know how to change your tire. You don't have to even drive, just know how to change your tire, and that's the first thing. So when they gave me the car, they was like, okay, let's do a test. You Can have you to know change some a basics about repairing. Yeah, and they actually tested me, can you change a Scorpio tire, which is like heavy, and I used to do the repairs myself. So I think अब वो time है जब मुझे if I have to do long travels, I get some collab only on the vehicle bit because a lot of automobile brands kind of know. But otherwise, I think local travels I do in my trusted Baleno. Maybe जैसा आपने बोला आगे क्या है, तो मैं सोचती हूँ कि कभी दोबारा से बैंक बैलेंस थोड़ा बढ़ जाएगा तो I'll buy a SUV again. But yeah, that's Because pretty much. motorsports is also like a dream for many girls, ठीक है, Yeah. around me. और बहुत लड़कियां मतलब इवन कि मुझे बाइक चलानी आनी चाहिए, मुझे कार सीखनी, मुझे कार लेनी है, तो वो एक बिग डील है. और जब मैं लड़कियों को देखता हूँ उसमें मोटर स्पोर्ट्स में, तो मुझे पर्सनली बड़ी खुशी होती है कि ओके, नाउ Oh शी इज yeah. डूइंग समथिंग. Yeah. No, ओके, it नाउ is शी very इज डूइंग. exciting. Like it's like this thing. Once you start racing, then you can't stop it. Then people put a lot of money in building bikes and cars. And तब मेरे पास तो इतना था नहीं. तो thankfully my friends used to be very supportive. So and then early in my motorsports career, I got sponsors like Merck and BMW, like really good sponsors. तो मेरी races बस sponsor हो जाती थी, not the entries, but just चलाना का part, which is also big. So yeah, but I totally recommend. Also, FMSCI India is one body where which regulates the licensed races in India, so one can actually read about it. Otherwise, you can always DM me and I'll guide you. Okay, अब anyone wants to ask some question to Kavya, you can I think मैं ask इतना him the बातें करे question. जा रही हूँ लगातार, पूछूंगा. that people are like okay. बिकॉज Yeah, एक but है कन्हैया स्वामी का क्वेश्चन कि असॉर्ट का कोई एक्सपीरियंस है क्या आपका? okay, so Assort, हाँ. yeah, Kanhaiya, I think Assort was the mother company of the brand that I was heading, but I've really not worked there. So, yeah, if you ask my experience, no, no. You don't have. Okay. Okay, okay, there are lots of people still joining in, which is like, okay, very interesting. But Actually, I have shared that particular link on my WhatsApp number.
तो एक Yeah. व्हाट्सएप नंबर मेरे स्टूडेंट्स के पास है, लाइक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो आते रहेंगे, देखते रहेंगे, वो ऐसे ऐसे करेंगे वो। Okay, but I want to ask you one question before we set या off because we have some time. Okay, how do you have so much following on your YouTube? How do you stay consistent? What is the secret? Like, do you film everything? Like, do you film, shoot, edit on your own? Like, because ये यस भी एक आई, बहुत बड़ा टेंशन होता है सब लोगों को, हाँ मुझे तो है। बहुत बड़ा टेंशन है। आई रिकॉर्ड बाय माई सेल्फ, आई एडिट बाय माई सेल्फ, ठीक है, आई सेलेक्ट पिक्चर्स बाय माई सेल्फ, ठीक है। और मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज आई समराइज नॉवेल्स, ठीक है, तो पहले वो नॉवल पढ़ना, उसको समराइज करना, स्क्रिप्टिंग करना, देन रिकॉर्ड करना, फिर एडिट करना, फिर अपलोड करना, देन थंबनेल्स, बहुत सारे काम है, तो Yeah. इट So टेक्स how अ do you take लॉट out ऑफ। time? Like how every day dedicate some time to creating आई content? डेडिकेट सम टाइम, हाँ क्रिएटिव, आई डेडिकेट सम टाइम्स, लाइक फॉर एग्जांपल, आई टेक ओनली 2 बैचेस ऑनलाइन, 6 to 7 and 10 to 11, मंडे टू फ्राइडे, Hmm. सैटरडे संडे ऑफ, टोटली ऑफ। एक तो वो, ऊपर से जो बाकी का बचा हुआ टाइम होता है, आई मैं उसको इसी में खर्च करता हूँ, लाइक Oh, स्क्रिप्टिंग, इमेज सिलेक्टिंग, क्योंकि बिकॉज इफ यू विजिट माई चैनल ना, तो आप देखेंगे कि जो समराइज हो रहा है वो इमेजेस की मदद से हो रहा है वहां पर, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि विजुअलाइजेशन आपके सामने हो रहा है रोमियो एंड जूलियट का, रोमियो भाभी yeah. का, ठीक है, तो ऐसे, तो उसमें टाइम लगता है, और उसी वजह से वो फॉलोइंग हुई है, बिकॉज आई थिंक आई वॉज द वेरी फर्स्ट इन इंडिया हु स्टार्टेड दैट पर्टिकुलर जॉनर। लोग इंग्लिश पढ़ा रहे थे बट कोई लिटरेचर नहीं पढ़ा रहा Oh wow. I have to था। really get motivation on this. In fact, मैं कब से सोच रही हूँ कि कि मेरी entrepreneurship journey पे मैं YouTube पे shorts डालूं या कुछ, because not many people shift like this. Obviously बहुत लोग हैं मेरे जैसे, but I thought कि नहीं, मुझे तो करना चाहिए, but वो motivation अंदर से नहीं आ रहा। आपको सुन के अब मुझे भी लग रहा है कि नहीं, Anuradha also Please, says we please, love those videos, so now please. I'm gonna I, Our next collab, our next collab will be on YouTube. yes. Totally, totally. But yes, I think it's always co-learning. And I think one good thing that I have learned since we met, virtually is that I've seen that, oh, you know what? Like, just like you are also doing two things and it takes up your time. And YouTube is a very different ball game. I always feel that. And to stay Really, consistent there, it's like a big deal. And I am taking that lesson today. So, yeah. literally. So, okay, if we do not have questions, then maybe we can. Okay, then we have actually finished on time, before time. Yeah, before time. 9:57. And आज तो मैंने खाना भी नहीं खाया, तो अभी ये लाइव खत्म करके I'll have dinner. But I totally look forward to all of you guys. I think if people from my handle are visiting, you should totally see Zubair's YouTube. And if you are watching from Zubair's handle, you can feel free to message me on anything that you would want help on. Really. चलिए, तो keep motivating girls, ठीक है, Yes, और thank घूमते you, रहिए, Zubair. Yes, thank you घूमते for रहिए, doing best of luck. this. And thank you. And let's stay in touch. Obviously, goes without saying. Yeah, obviously, obviously. Thank you. Good night and have a great week, everyone here, guys. Bye. Bye. Bye, Kavya. Bye. Thank you. Bye.